Hello everyone. Today we will study about the pharmacovigilance method. So in this the pharmacovigilance method के कितने टाइप्स है मतलब कितने मेथड्स है इसमें. एक पैसिव सर्विलेंस है, स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग सेकेंड, थर्ड वन इज़ द एक्टिव सर्विलेंस, फोर्थ वन इज़ द कंपेरेटिव observational studies, and fifth one is the targeted clinical investigation, and sixth is the vaccine safety surveillance. So we will study one by one. First we will study about the active surveillance. In contrast to the spontaneous reporting seeks to ascertain complete number of adverse events through continuous pre-organized process. For example, follow up of patient treated with particular drug, as in the cohort event monitoring. Patient who filled prescription for this drug might be asked to complete a brief survey form and give permission for later contact. These are the some. It requires the more time and resource, less commonly used in the emergency case, than it is more complete than as compared to that of the passive surveillance. It is more feasible to get comprehensive data on individual adverse event reporting. फर्स्ट जो इसके टाइप के अंदर आता है, ये सब हम एक्टिव सर्विलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं. फर्स्ट इसके अंदर आता है सेंटिनल साइट्स. Active surveillance is achieved by reviewing medical reports, interviewing patients or physician in a sample of sentinel sites to ensure complete and accurate data on reported adverse event. Provide information such as data from specific patient subgroups that would not available in a spontaneous reporting system. Information on the use of the drug, drug abuse, can be targeted at selected sentinel sites. It requires more time and the resources. It produce the more detailed data on case of illness. It is best if it is considered to be best if more intensive investigation of each case is necessary to collect necessary data. इसके जो मेजर ड्रॉबैक्स कह सकते हैं या फिर जो भी वीकनेस है, इसकी डिसएडवांटेज कह सकते हैं. इंक्रीज द कॉस्ट, रिक्वायर्स स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट, सिलेक्शन बायस. It is more relevant to confirm a specific adverse reaction suspected with established drug. Active participation means इसमें active participation होता है मेडिकल एसोसिएटेड स्टाफ एंड पेशेंट्स का. Next is the drug event monitoring. It generally depends on the active participation of the medical staff. Yeah, it is the method of the active surveillance. A patient might be identified from the electronic prescription data. Automated health insurance claim, इससे हम लोग पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ए फॉलो अप क्वेश्चनराई जो होता है, क्वेश्चनराई इज सेंड टू द फिजिशियन एंड द पेशेंट at pre-specified intervals to obtain the outcome information. मीन्स क्वेश्चन राय क्वेश्चंस होते हैं वो सेंड किए जाते हैं फिजिशियन या पेशेंट को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, टाइम पीरियड जो भी होता है उनका, और टू ऑब्टेन दी आउटकम इंफॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग. इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट डेमोग्राफिक्स, इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, डोजेज, clinical events, reason for discontinuation of therapy. These are included in the questionnaire. These are the first. The limitation for this is the poor physician and patient response rate, unfocused nature of data collection, which can be obscure important signals. Active participation of patient is essential. It is also termed as cohort event monitoring. In this, there should be maintenance of patient confidentiality. Third one is the cohort event monitoring. It is the modification of drug event monitoring. Then it is promoted by WHO and other agencies. It is a method where information is collected with focus on events on all the patients in a group being treated with medicine or group of medicines. Pre-treatment questionnaire are filled at the time of the recruitment, and post-treatment questionnaire are filled at the time of follow-up, which may be either once, for example, anti-malaria or lifelong, or the antiretroviral.
Registries, it is a list of patients presenting with same characteristics like pregnancy, disease, specific exposure, pregnancy or disease and specific exposure. Both type of the registries, which only differ by the type of patient data of interest, can be collected with battery of information using standardized question in a prospective fashion. इट इज़ ए डिफरेंट टाइप्स. ये जो है कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशन स्टडी, ये अलग है. ये सेकंड कह सकते हैं. पहले हमने एक्टिव सर्विलेंस के अंदर 4 टाइप्स देखे थे. सेंटिनल साइट्स, ड्रग इवेंट मॉनिटरिंग, कोहर्ट इवेंट मॉनिटरिंग एंड रजिस्ट्रीज. ये अलग है. ये सेकंड है, दैट इज़ ए कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़. इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं. पहले देखते हैं कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़. जो होता है वो यूज़फुल होता है इन वैलिडेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम दी केस सीरीज और द स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट से. इसके अंदर पहला जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी आता है. डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है पेशेंट से एट ए स्पेसिफिक टाइम regardless of their disease status. It is used to gather information regarding the survey or ecological analysis. The major drawback for the case cross sectional study is the temporal relation between exposure and outcome cannot be directly addressed. It is best it is best used to examine prevalence of disease at one time point, or examine trend over time when data for several time points can be captured. It is used to examine association between exposure and outcome in ecological analysis, but utilized when exposures. It is best utilized when the exposure not changes over the time. एग्जाम्पल इसमें एक फ्लोरोसिस का दे रखा है, जो कि कॉज किया जाता है बाय द कंटिन्यूस लीकेज जो होता है फ्लोरीन का वाटर के अंदर, उसकी वजह से. ये एक एग्जाम्पल है. केस कंट्रोल स्टडी, इन दिस इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड. जो भी इवेंट होते हैं वो आइडेंटिफाइड किए जाते हैं. इसमें कंट्रोल और पेशेंट्स दीज आर विदाउट द डिजीज और इवेंट ऑफ इंटरेस्ट आर देन सिलेक्टेड फ्रॉम सोर्स पॉपुलेशन दैट गिव राइज टू द केसेस. Control is selected in such a manner that the prevalence of exposure among the controls represent the prevalence of exposure in the source population. The exposure जो भी होगा इसका हम लोग वो कंपेयर, एक्सपोजर जो भी होगा दो ग्रुप्स का, उनका जो स्टेटस होगा एक्सपोजर का, वो कंपेयर किया जाएगा ऑड्स रेशियो से, विच इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द रिलेटिव रिस्क ऑफ डिजीज इन द 2 ग्रुप्स. केस कंट्रोल स्टडीज, ये एक एग्जांपल है. इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक स्मोकिंग का, एक नॉन स्मोकर टाइप के. ये एक एग्जांपल ले सकते हैं. केस कंट्रोल स्टडी में यहाँ पे केस दिया है, यहाँ पे विद डिजीज़, जो डिजीज़ के साथ है, एक्सपोज नॉन एक्सपोज हुआ था या नहीं. कंट्रोल विदाउट डिजीज़ मीन्स नॉन स्मोकर ले सकते हैं, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज. ये जो है लेस एक्सपेंसिव होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस सैम्पल, रेट्रोस्पेक्टिव, नो नीड ऑफ लॉन्ग फॉलोअप पीरियड. रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग आगे लिख रखा है, इसमें होगा. कोहर्ट स्टडी, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ डिजीज and useful for study the link between risk factor and the health outcomes. A population at risk for the disease followed over time for occurrence of the disease. Information of exposure status is known throughout the follow-up period. A patient might be exposed to a drug at one time during follow-up but non-exposed at another time point. Population exposure during follow-up is known. Incidence rate can be calculated. Useful when there is a need to know the incidence rates of adverse event. Multiple adverse event investigated using same data sources. मतलब इसमें हम लोग जब मल्टीपल एडवर्स इवेंट को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और ये यूज़फुल होता है जिससे कि हम पता लग कर सकते हैं कितने इंसिडेंट रेट का है, इंसिडेंट रेट्स कितना है एडवर्स इवेंट का. और ये जो है डिफ़िकल्ट होता है टू रिक्रूट सफिशिएंट नंबर ऑफ द पेशेंट जो कि एक्सपोज हो चुके हैं किसी ड्रग को, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. हाँ, तो ये एक मैंने बताया यहाँ पे जो रेट्रोस्पेक्टिव केस स्टडी कोहोर्ट स्टडी एंड द प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज. तो रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है, पास्ट में देखा जाता है, लुकिंग बैकवर्ड इन टाइम, वेयर एज द प्रोस्पेक्टिव मीन्स लुकिंग फॉरवर्ड इन टाइम. तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन लेंगे स्टडी जो भी हमें
जिन पे करना है स्टडी, एंड एक्सपोज ग्रुप का पॉपुलेशन हो जाएगा और अनएक्सपोज पॉपुलेशन जो नहीं एक्सपोज हो चुके हैं। इसमें कंडीशन किनको कंडीशन डेवलप हो रही है, मीन्स जो भी डिजीज़ है वो डेवलप हो रहा है, वो लाइक दैट, एंड कंडीशन नॉट डेवलप, इसमें भी वही है। इस टाइप से वो ये रिप्रेजेंटेशन होता है कोहोर्ट स्टडी के अंदर, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट इज अबाउट द पैसिव सर्विलेंस. Passive surveillance refers to the collection of pharmacovigilance data from the conventional procedures of treatments. इसमें 4 टाइप्स होते हैं. पहला इसमें जो है नहीं 3 होते हैं आई थिंक. पहला जो है वो स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट्स है. अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर कंज्यूमर टू किसके साथ होता है, नेशनल पीवी सेंटर, फार्मास्यूटिकल कंपनी, रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन that describes one or more suspected adverse reactions in patients who was given one or more medicinal product and that not derived from study or any organized data collection system where adverse event reporting is actively sought. It plays a major role in the identification of the signals of drug-related problems over once a drug is marketed. जब भी ड्रग मार्केट होता है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि रिस्क ग्रुप पे कौन सा रिस्क ग्रुप के बारे में, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल फीचर्स जो भी नोन है एडवर्स सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन के. देन ऑल द केसेस इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट आर एंटर्ड ऑन द सेफ्टी डेटाबेस. जो एंटर करते हैं सेफ्टी डेटाबेस उसे हम विजीबेस कहते हैं. विजीबेस एक डेटाबेस होता है जो कि एग्जामिन किया जाता है इंडिविजुअली एंड इन द एग्रीगेट फॉर ए प्रोडक्ट in order to identify a cluster of reports that could represent a signal of previously unknown adverse reaction, drug interaction, some changes in the characters of a known adverse reaction. फिफ्थ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज करते हैं न्यू रिस्क फैक्टर्स को. विजिबेस जो है मेंटेन किए जाते हैं इंटरनेशनल बाय UMC, दैट इज़ द उपसला मॉनिटरिंग सेंटर. देन द एक्टिविटी जो भी है ये जो एक्टिविटी सपोर्ट की जाती है WHO. इफ़ कंसर्न स्टाफ इज़ नॉट दैट मच अलर्ट दैन रिकॉर्डिंग इवेंट्स, देन टोटल रिपोर्टिंग, टोटल जो भी रिपोर्टिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन द केस सेकेंड वन, केस सीरीज ऑफ द spontaneous reporting. It provides evidence of an association between a drug and an adverse event. It is useful for generating hypotheses than for verifying association between drug exposure and outcome. Third, certain adverse event known to be associated frequently with the drug therapy such as the anaphylaxis, aplastic anemia, toxic epidermal necrosis, Stevens-Johnson syndrome. When spontaneously reported, it is important that PV Center place should emphasis on reports for detailed and rapid follow-up. ये कुछ उनके ये एक एडवांटेज है उसका कि इट इज़ हाई सेंसिटिविटी फॉर डिटेक्टिंग नॉवेल्टी. इट रिमेन वन cornerstones of the medical progress. It provide many new ideas in the medicines. थर्ड जो है इसके अंदर टारगेटेड स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग है. इट इज़ वन ऑफ द वेरिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग. इट फोकस ऑन कैप्चरिंग द एडवर्स रिएक्शन इन वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट्स. It also focuses on specific drug of interest in specific population of interest, specific adverse drug reaction. इसमें मीन्स कोई भी स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर फोकस किया जा रहा है या फिर किसी भी पॉपुलेशन या फिर एडवर्स ड्रग रिएक्शन और वेल डिफाइंड जो भी पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जो भी ट्रीटमेंट हो रही है उसके ऊपर जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनके ऊपर फोकस किया जाता है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन चार्ज ऑफ पेशेंट्स आर sensitized to report specific safety concern. Patients are monitored. Adverse reactions are reported as normal component of routine patient monitoring and standard of care. मतलब जो भी इसमें जो एडवर्स रिएक्शन है वो डेली रूटीन पे जैसे हम लोग चेकअप करते हैं पेशेंट का डेली रूटीन पे उसी टाइप से हम लोगों को जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगी वो भी रिपोर्ट करनी चाहिए एज ए डेली रूटीन में.
It requires no active measures to look for a particular syndrome. Same objective, okay. The it has the same objective as spontaneous reporting, flow of information. अच्छा, जो भी ऑब्जेक्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है एंड जो भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सिमिलर होती है स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग के. द सेम ऑब्जेक्टिव एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिमिलर एज दैट टू ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग. नेक्स्ट इज द स्टिमुलेटेड रिपोर्टिंग. Several methods are used to encourage and facilitate reporting by healthcare professionals in specific situations for limited time periods for new products. All healthcare professionals are encouraged to add reporting adverse reaction to drugs actively. It includes the online reporting of the adverse event, systematic stimulation of reporting of adverse event based on pre-designed case definition. It occurs during the direct healthcare professional communication, a publication in the press of the healthcare professional by the company's representative. It has shown to improve the reporting. It is not devoid of limitation of spontaneous reporting, especially selective reporting and incomplete information. This is all about the PV method. I think targeted clinical investigation is not included. I will add that in the next video. Okay, thank you.